viewers, I am Garima. So in this video we are going to discuss about the importance of software testing in the industry. So let's start. SQT. Uh, Before I start our PPT and topic go through session, I would like to elaborate that our curriculum of SQT is divided in two parts. One is for a manual SQT part, manual testing, and other one is for automation testing. Okay, in this manual testing stuff, we usually divide our curriculum in three major topics. One is core manual testing on web application and desktop application. Then we discuss about database testing, and then we discuss about mobile application testing. Okay, this is our core SQT for manual testing. Okay, so now we will discuss about what all the topics and what all the things which we are going to cover in this session. So first we will start your session with a brief introduction of IT industry, how this IT industry work, how we are going to understand that where is the IT industry is dependent, how these IT industry is dependent on other systems, other industries, how we are helping them to generate their requirement and how to cover their requirement out, how to understand these requirement and get elaborated these requirement, get jot down, get written down those requirement, and then understand and make a software completed in SDLC model. Then we will understand about two kind of industries which are available in this IT industry. One is product and project. So we will understand about the difference, what is the difference between them. So in this we will discuss about uh, product and project based industries, what is the difference between them, how this product industry is having more benefit and project industry is having means like less risk but less profit, as well as the product industry has more risk but more profit as well. Then we will discuss about testing axioms over there. What is the testing over there? How we have to perform? What is our role? What all kind of application we have to test? Why we have to test? What all the benefits of doing the testing over there? What all kind of testings are available in the market? Like if we talk about BVT, sanity, smoke, compatibility, browser cross-browser testing, and module testing, integration testing. So we will discuss about them. After then as we know that when human is not a god, so they whatever they make, whatever they create or whatever they develop as a software, it might have some mistake or it might have some different understanding of the software, because everyone thinks in a different perspective. So there might be a chance you get some error, failure and defects. So whatever these terms are called in IT industry, we will discuss about them. What is these terms, what is these terms are mainly related to, why these terms are coming inside this. So when we understand these concept, then हमें समझना है कि डिफेक्ट मतलब गलतियां कैसे हो रही हैं, और गलतियां पकड़ने का काम ही हमारा काम है। सॉफ्टवेयर जोड़ने का काम डेवलपर का होता है, सॉफ्टवेयर तोड़ने का काम टेस्टर का होता है। हमें गलतियां ढूंढनी है ताकि हमारा जो भी सॉफ्टवेयर बन रहा है वो इट शुड बी वेरी गुड एंड इट शुड बी ऑन परफेक्ट क्वालिटी व्हाट इज कमिटेड टू द कस्टमर। लाइक हमारे पास कई सारी बॉडीज, कई सारे स्टैंडर्ड्स हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे, वो सब चीजें हम पढ़ेंगे और उन सब चीजों को डिस्कस करके वी विल contribute कि how we have to perform our testing in the society. Okay, then हम discuss करेंगे about SDLC model, and one then these topics, when to start testing, when to stop testing, will be covered for you in the test plan. And there are some testing myths which the people have sometimes, like why testing is so expensive, time consuming, and why we have to do this. So we'll discuss about these things. Then we will discuss about SDLC. SDLC में हम discuss करेंगे about what all the models, what all the pupils we have to interact with, what are all the roles which we can see in the SDLC model. लाइक हमारे पास बिजनेस एनालिस्ट होता है, प्रोडक्ट ओनर होता है, डेवलपर होता है, टेस्टर होता है। तो हमारा रोल कहाँ आता है? डेवलपर, ऐप डिजाइनर और डेवलपर क्या करते हैं, हाउ दिस बीए एंड पीओ रिक्वायरमेंट कैसे जॉट डाउन करते हैं, कैसे लिखते हैं, क्या समझते हैं और हमें उसमें से क्या एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, हम इसे पढ़ेंगे एक एग्जांपल लेके। So we will discuss about these things with models like waterfall model, prototype model, V model, spiral model, we have iterative model. So we will discuss about these model, कैसे मॉडल काम करते हैं, क्यों ये मॉडल काम करते हैं, क्या इनमें बेनिफिट है होने का, क्या इनका बेनिफिट नहीं है हमारे पास, क्यों हमने इन मॉडल को यूज करा हमने आईटी इंडस्ट्री में।
उसके बाद हम सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आजकल बहुत डिमांड में है मॉडल्स में, वो है अजाइल। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अजाइल कैसे काम करता है। अजाइल में व्हाट वी हैव लाइक प्रोडक्ट बैकलॉग, इंटरेक्शन बैकलॉग, स्प्रिंट बैकलॉग, यूजर स्टोरीज, स्प्रिंट स्टोरी पॉइंट्स, स्क्रम मास्टर, डेवलपर, टीम्स, क्या ये रोल्स होते हैं, हाउ वी हैव टू इंटरेक्ट विद देम। देन वी विल डू सम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, ट्राई टू गो थ्रू सम रिक्वायरमेंट्स। हम लोग थोड़ा रिक्वायरमेंट गो थ्रू करेंगे, लाइक फ्रॉम बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, and we will go through SRS and HLD LLDs and try to understand how we have to fetch the requirements out of it and how we have to develop the test case out of it. Okay, ताकि आप इंटरव्यू में जब जाएं तो आपको अगर कोई रिक्वायरमेंट सिनेरियो दिया जाए तो आप उसे समझ सके, पढ़ सके और इंटरप्रेट कर सके. Okay, then we will go to black box, white box and gray box testing. इनमें हम टेस्टिंग मेथोडोलॉजी कहते हैं. So we will discuss about that and corely we have to work upon and follow upon the black box testing. तो ये चीज हम mainly we have to focus on this session. But we also for white box and gray box we require some technical knowledge, we require some coding techniques like da or ds. So we majorly don't focus on it, but to know that why these three kind of testing are popular in the software industry, so we have to understand these three terms. So we will discuss about them also. In ISTQB they sometimes ask like there are 50 questions in ISTQB, so sometimes वो लोग 40 to 45 क्वेश्चन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग से होते हैं, 5 to 10 क्वेश्चन व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग से पूछ सकते हैं. तो वो जो 5 to 10 टेस्ट के सॉरी क्वेश्चन जो पूछते हैं, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं. तो अगर उनके बारे में कुछ पूछा जाता है तो हाउ यू कैन आंसर दैट. सो वी विल टैकल दिस इंफॉर्मेशन की व्हाट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच वी नीड टू नो आउट ऑफ दिस व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग सो दैट वी कैन आंसर ISTQB क्वेश्चन आउट इजीली ओवर देयर. ओके, then we will discuss about these in detail. Black box क्या होता है, white box क्या होता है, how this code is working, what are the advantages, what are the disadvantages of them. Then we will discuss about gray box testing, what is the gray box advantages are there over white box and black box testing. Okay, then we will discuss about level of testing in detail. पहले हमने उसके बारे में समझा था इन जनरल लेमन टर्म में डिस्टिंग्विश किया था. नाउ वी विल रिलेट देम टू विद द आईटी इंडस्ट्री की आईटी इंडस्ट्री से वो कैसे रिलेटेड है. तो विल डिस्कस अबाउट यूनिट टेस्टिंग, मॉड्यूल टेस्टिंग, कंपोनेंट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, system testing, acceptance testing and alpha beta testing. Then we will discuss about a top down integration approach and bottom up integration approach with the help of stub and driver. कैसे ये काम करता है, कैसे how this is implementing in the testing. So we will discuss about them. Then we will discuss about level of testing. For in the continuation we will discuss about UAT, acceptance testing, and then we will discuss about alpha and beta testing. Then we will discuss about verification, validation, how this works, how this is distinguished from the static and dynamic testing. Then we will discuss about functional and non-functional testings in the categories like we have smoke, sanity, retesting, regression testing, exploratory, monkey, end-to-end, UI in testing, usability testing, stress testing, performance testing, security, compatibility. So we will discuss about these topics. ये टेस्टिंग कैसे वर्क करती है, नॉन फंक्शनल हमारे लिए क्यों जरूरी है और फंक्शनल हमारे लिए क्यों जरूरी है, ताकि हम फ्यूचर में हमें जो भी टेस्टिंग करने को मिले हम उसे इजीली परफॉर्म कर पाए. तो हमें इनके टर्म्स समझने जरूरी होते हैं. तो हम ये सब टर्म्स पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे in detail with the some practical examples. उसके बाद we will take Jira tool और उसमें Jira tool के बाद हम लेके उसमें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे कि कैसे यूजर स्टोरी बनाई जाती है, कैसे डिफेक्ट लॉग किए जाते हैं, कैसे टेस्ट केस बनाए जाते हैं, हाउ टू राइट द टेस्ट केसेस इनसाइड द Jira, हाउ टू implement the test user story over there, how to move the user story in the different phases, who all people will be owner or responsible of moving those stories, how to move them, how to log a defect, what is a defect software testing life cycle, and then we will discuss about software defect life cycle. Okay, so अब इसमें we have requirement analysis were done by the testers now, and in this with then we will discuss about test planning. In this we will do the test plan creation and test strategy creation. Then we will do test case development, we will write the test scenarios and test cases. Then we will set up our environment and do the execution of the test cases. Environment setup is nothing but हमें जब डिलीवरी मिलती है एप्लीकेशन की और हम उस एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना शुरू करते हैं. ठीक है, इसमें हमें क्या क्या करना होता है, आरटीएम वगैरह बनाना होता है, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, इसमें क्या बनाना होता है इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल हम करके देखेंगे. इसके बाद टेस्ट प्लानिंग में क्या क्या होता है, कैसे बनाना होता है, ये हमें बनाना नहीं होता है क्योंकि लीड और मैनेजर बनाते हैं, बट वी शुड नो हाउ टू रीड देम सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज अवर रिस्पांसिबिलिटी एंड हाउ वी हैव टू एग्जीक्यूट अवर रिस्पांसिबिलिटीज ओवर देयर. ओके, देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट टेस्ट स्ट्रेटजीज. इसमें हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज टेस्ट स्ट्रेटजी एंड हाउ इट इज मेकिंग डिफरेंस विद टेस्ट प्लान and what are these main points to which we have to work on it. Okay, then we will discuss about test case banana kaise, how to develop these test cases out and fetching the requirement, understanding the requirement and requirement se test case kaise likhna hai, और उसमें प्रायोरिटी और
प्रायोरिटी और प्री कंडीशंस और टेस्ट डाटा वगैरह वगैरह क्या फॉर्मेट्स होते हैं, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे और टेस्ट केस लिखना सीखेंगे. Okay, once we are done with the test case, the test scenario, test cases में difference समझेंगे. Then we will understand that some testing techniques which will help us to write the test cases like equivalence partitioning, decision table, state transitioning, boundary value, error guessing techniques. So these techniques are very helpful while we are writing the test cases and fetching out the fetching out the test cases out of the requirement given to us, like from business requirement document, functional requirement document, or the user stories of a child. तो हमें इसमें कैसे फैच करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, वी डोंट हैव सॉफ्टवेयर in hand to execute, perform the some exploratory part and then write the test cases. Sometimes we only have documents. तो अगर उस document मिला है, हमें application कभी हमने देखी नहीं है, तो how we will understand those things and how we will write the test cases, these techniques will be very helpful and we will understand how this technique will be helpful to us and how to write these test cases over there. Then we will discuss about tested data preparation, then we do test case review, then we do test case environment, then we will execute the test cases, and then we discuss about defects. Now, not but the least, software must have the defects as well, कि कौन सा टेस्ट केस पास हुआ, कौन सा डिफेक्ट टेस्ट केस फेल हुआ. जब टेस्ट केस फेल होगा तो मतलब कुछ इशू आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई है. जब प्रॉब्लम आती है तो हम एक डिफेक्ट रेज करते हैं, तो जो कि सेवेरिटी और प्रायोरिटी के केस में चलता है. तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, सेवेरिटी प्रायोरिटी कैसे वर्क करती है, डिफेक्ट क्या है, बग क्या है और एरर टर्म्स कैसे वर्क करते हैं, इनकी क्यूमुलेटिव रिपोर्ट्स कैसे जनरेट होती हैं, ये सब हम देखेंगे. कॉमन एरर जो हमें एक्सपेक्टेड होती है वो हम डिस्कस करेंगे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिर हम डिबगिंग और आरसीए के टेक्निक्स के बारे में समझेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे डिफेक्ट की मेन जड़ क्या है और हम उसे कैसे निकाल सकते हैं. ठीक है, डिफेक्ट को सही करना सिर्फ एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, बट उसके रूट कॉज को हटा देना ही उसकी मेन जड़ प्रॉब्लम को हटाने का सॉल्यूशन होता है. तो वी शुड ऑलवेज डिबग एंड डू द आरसीए ऑन सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स. ठीक है, कैसे करते हैं वो हम पढ़ेंगे. उसके बाद हम उस टूल के बारे में एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके देखेंगे जीरा में, कैसे क्या क्या फील्ड्स होती हैं, कहाँ कहाँ हमें क्या क्या रेस करना होता है, क्या बॉडी डालनी होती है, व्हाट ऑल द अटैचमेंट्स वी हैव टू प्रोवाइड, व्हाट ऑल द डिटेल्स वी हैव टू प्रोवाइड. तो वी विल डिस्कस अबाउट दीस स्टफ्स. ओके, and then once we are done with the particular ISTQB with SQT training over here for manual testing part, with some we will discuss after then the ANSI body and IEEE standards, what we have to follow while doing the testing in the industry. Okay, then there are some boards which are common to have the certification from ISTQB with ITB board, ASTQB or New Zealand board, Austrian board, and other countries have all other boards, but ISTQB is common to all of them. The syllabus is common, so our curriculum is more aligned to the ISTQB part as well, so we can understand that if we are getting trained for the testing part as well as for the ISTQB certification. Okay, then hence we complete our manual testing part on web application and desktop application. Once you are done with this, you will get some assignments, you will get some in between, also you will get some practice assignments as well as a few interview questions will be discussed in the sessions, and also you will have some mock interview sessions with the trainer, and also you will get some practical assignments so that you can have hands-on practice over there and you can do some practical things, and you can also show these things in your summer trainings, like stuff like as you show in the summer trainings that we have done summer training 2 months on this project, like that you can show that you have worked on practical assignment with Croma campus while you are doing the training from Croma of SQT. Okay, once we are done with this, then we will start our database training. Over there we don't have any PPT right now, so we will discuss only about the DBMS, RDBMS, normalization concept, like with have 1NF, 2NF, BCNF concepts, why these normalization are applied over there. We will discuss these things, and then we will move to SQL queries, which is structured query language, in which we will discuss about DDL, DML, and TCL languages, how these are syntaxes going to work, how these syntaxes are understandable by the database, and how this backend will help in testing. So we should know that when there is a front end of the application, there should be always a back end of the application. So how this backend is getting synced with the application or not, or working fine or not, we have to test the backend as well. So how we have to perform it to make it happen, make the testing done for the backend, we have to understand SQL for interaction with database. And in database, we will usually take either Oracle Lineage tool for testing, or either we take MS SQL for testing. Okay, then we will complete your database testing part, then we will start your mobile testing application part, and then we will discuss about how this application is going to test, how we have to install it, how we have to write the test cases. Like the test case written format will be same what we have already done in SQT part. It's just like what extra things which you need to see and take care while writing the test case and while executing the test cases for mobile application. So we will discuss those part, and hence we will complete your this manual training, in which we have
taken around 30 to 35 classes, which will be of 40 to 45 hours of consumption over there. If you take a weekday classes, it will take you around 1.5 months. If you take weekend classes, it will take you around 2 to 2.5 months. Okay. Then we will start your automation training. So in automation training, means like if I say like why we recommend the automation training with manual testing, because nowadays it's so high competition in the market and everyone is seeking for more information and more knowledgeable candidates while they're taking the interview. So we recommend you to go through with the automation training as well. So in this, we provide you the 2 software trainings. Either you can opt for one, anyone. The out of 2, you can opt for anyone. Like one is HP with QTP and one is Selenium with Java. Selenium with Java we recommend highly because it is a very popular tool and it is very demandable with respect to HP UFT and QTP. It is not much demanded in the market because it is a very high paid tool. So no, most of the company go for Selenium with the WebDriver with the Java because it is a free based tool, as well as the application is, most of the applications are moved to web based applications. So Selenium is more compatible with them. So that is more demanding. So what we do in this automation training, we will discuss about first how the setup need to be done, what all the setup like Java setup, Eclipse setup, and Eclipse will be used as IDE over there. Java is used as a language over there. We will do the Java setup, Eclipse setup, TestNG setup, Maven setup for you. Then we will start the JUnit training first to understand the concept of Java, how this Java work, how this if condition, for loop, switch cases, and while loop, do while loops, how this looping concept, condition concept works, how this oops concept work, like inheritance, polymorphism, abstraction, inheritance, encapsulation, how these concepts work, how we will train them. We will discuss them in all over the Eclipse. We will try to first discuss the theory over the whiteboard. In this Zoom, we have some whiteboard functionality. If you can see that this is the let's see, this is a whiteboard functionality we have. So over here we will do some practical things, like we will understand how we have to write, we said what all the terms we should understand, so that you won't write anything wrong. So encapsulation, so that you won't write anything in a improper way, or if you don't misspell it, so that we will discuss over the whiteboard as well. We will give you the example over the whiteboard. We will write over here and you can see what we have written. We will use some diagrams, we will use some draws over there. We will move to Eclipse and we will try to understand how this Eclipse work, how this program you need to execute over there. So we will do this Eclipse part. We will do some TestNG stuffs. We will try to write the code in Maven TestNG format. We will discuss about collection. We will discuss about exceptions, how to write the exception, how to handle those exceptions, what is try catch, what is throws. So we will discuss about them. We will discuss about some interview questions as well over there, like what other interview question can be expected from Java. तो हमें कौन कौन से जावा पढ़ने, कैसे जावा पढ़नी है, क्या हमें पढ़ना है, उसमें इफ कॉन्सेप्ट क्या है, इफ फॉर लूप क्या है, फॉर स्विच क्या है, स्विच लूप कैसे है, ये सब चीजें कैसे चलती हैं, कैसे काम करती हैं, हमें ये सब चीजें पूछते रहना है, समझते रहना है. ठीक है. जब हम ये चीज समझ जाएंगे, जब हम ये चीज कर लेंगे, तो हम लोगों का जो है अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी ज्यादा बेटर होगी कि जावा में हमने क्या सीखा, कैसे सीखा, फॉर लूप क्या हुई, इफ कंडीशन कैसे हुई, कैसे हमने कोड लिखे. तो हम हर एक चीज का पैकेज बनाएंगे, फॉर लूप बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे, क्लिप सेटअप वगैरह करना सीखेंगे, टेस्ट इंजन मेवन से हमें कैसे सेटअप करना है, ये चीजें सीखेंगे. फिर हम इसे हेलो वर्ल्ड और ये सब जो हमारे कोड होते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं. मैं आपको प्रैक्टिकली इसको एक एक कोड को लिख के दिखाऊंगा, फिर आपको समझाऊंगा कैसे ये वर्क करते हैं, कैसे हमें ये कोड लिखना है, कैसे ये चलाना है, किस तरह से जावा एप्लीकेशन चलती है, कैसे JUnit वर्क करता है. फिर हम टेस्ट इंजन, जब आप जावा समझ जाते हो, इट्स टेक अराउंड 15 से 20 क्लास हमें लग गई हैं. वी हैव टेकन अराउंड 15 to 20 classes in that. Once we invested this whole Java understanding, and we understood all the Java things completely, then we move to Selenium with test engine Maven. तब हम उसमें Maven और test engine से कैसे काम करते हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे कैप्चर करते हैं, वेब एप्लीकेशन में ऑटोमेशन क्यों जरूरी है, कैसे हमने ऑटोमेशन करनी, किस किस फेजेस में करनी है. So we'll discuss about them. Okay, then we will, once we are done with this automation techniques, then we will move to the framework part, then in which we will discuss about POM model, page object modeling कैसे होती है, and how to use keyword, how to use data driven over there. So we will discuss about them. So in the end you will having the complete framework with you, so that you can work on it. We will have some practical assignment. I will give you one practical assignment जिस पे आपको वर्क करना है, कंप्लीट करके लाना है. आपको गिटहब बनाना सिखाया जाएगा, गिटहब पे काम कैसे करते हैं वो सिखाया जाएगा, ताकि आपको वर्जन मेंटेनेंस भी आ सके. तो आप उसे कोड निकालना कैसे है, चेकआउट कैसे करना है, ताकि मैं भी उसे रिव्यू कर सकूं, प्लस आप भी उस पर काम करना सीख सको. तो ये टोटल सीख जाते हैं. उसके बाद हम आपको बताते हैं पहले एग्जीक्यूशन कैसे करना है, क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग कैसे करनी है, और आपको इसके अलावा सिखाई जाती है चीजें
कि ग्रिड एग्जीक्यूशन कैसे होता है और जेनकिन एग्जीक्यूशन कैसे होता है. So that's all for the training and training part, and this is our curriculum, this is our complete topics. ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है जो हम पढ़ाएंगे आपको. इसमें टोटल आपको 3.5 months लगते हैं to 4 months लग जाते हैं, जिसमें हम कंप्लीट करते हैं आपकी मैनुअल प्लस ऑटोमेशन ट्रेनिंग और इन वीकडेज पार्ट, एंड इफ यू गो विद वीकेंड इट विल टेक अराउंड 4 to 4.5 month, जिसमें हम आपकी वीकेंड ट्रेनिंग में आपकी मैनुअल टेस्टिंग प्लस ऑटोमेशन टेस्टिंग भी कंप्लीट ओवर है. So that's about all the stuff. Let me know if you have any questions. Feel free to ask over here. Thanks a lot. Okay, so yes, one more thing we have left over here is placement. So in our Croma campus, the advantage is over having over board on board with Croma. आप Croma में आते हो, आपको एक extra benefit क्या होता है कि हमारे पास training and placement cell भी है. आपका एक WhatsApp group बनाया जाएगा, and in which you will be like enrolled, and once you enrolled, you will having a WhatsApp group in which you have the numbers of ट्रेनर, जो आपके ट्रेनर है जो आपको पढ़ा रहे हैं वो रहेंगे. वो आपको डेली बेसिस पे रिकॉर्डिंग्स देंगे. यू हैव डेली बेसिस रिकॉर्डिंग, यू हैव द पीपीटीज, you have the notes, as well as if you want to make a note, if you want to have a doubt sessions, there will be a doubt sessions. आप ट्रेनर से बोल सकते हो कि सर मुझे डाउट सेशन चाहिए प्रैक्टिकली, तो आप मुझे बता दीजिए. फिर हमारे वहाँ पर एचआर रहते हैं जो कि ट्रेनिंग प्लेसमेंट देखते हैं. जैसे ही आपका सेशन और कोर्स 70% कंप्लीट हो जाता है, हमारे ट्रेनर्स अपना जो हमारे एचआर प्लेसमेंट सेल वाले ग्रुप के लोग हैं वो आपको ऑटोमेटिकली जॉब ऑफर्स प्लेस करने लगते हैं, ग्रुप में पोस्ट करते हैं. इफ यू आर इंटरेस्टेड आप अप्लाई कर सकते हैं और आप वहाँ पे इंटरव्यू जाकर दे सकते हैं. तो ये क्रोमा कैंपस आपको एक एडिशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको कोई फीडबैक देना है, कोई इश्यूज हैं, कोई बातें हैं, या कुछ आपको एडवाइस चाहिए, कुछ भी आप ऑन पर्सनल लेवल, ऑन कैरियर ग्रोथ लेवल, और ऑन इफ यू आर इन प्रोजेक्ट और इफ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी और आप उसमें कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी आप ट्रेनर से और अपने कंसल्टेंट से डिस्कस कर सकते हैं. इसके बाद अगर आपका सेशन ओवर भी हो जाता है, इसके बाद भी अगर आप इफ यू थिंक दैट आई नीड सम सजेशन, आई नीड सम हेल्प, क्रोमा इज ऑलवेज हियर, ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू. आप आए, अपने ट्रेनर से कांटेक्ट करें, अपने कंसल्टेंट से कांटेक्ट करें, और आप उनसे इन टच होकर आप अपना क्वेरी और अपना डाउट डिस्कस कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर डेमो पर्पस.